अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त CSS जो रिज़ल्ट आयो आहे 2022 जो, ऐं उन में 14,500 ऐं समथिंग स्टूडेंट्स अपियर थिया। पर उन्हनि मां सिर्फ़ु अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी जेके एस्पायरेंट्स आहिनि उहे क्वालिफाई कोन करे सघिया फर्स्ट पार्ट, ऐं जेके पास करे सघिया मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। ऐं टोटल 376 स्टूडेंट जेके आहिनि उहे क्वालिफाई करे सघिया आहिनि। आई होप यू नो। So today we are going to discuss what are the reasons majority of the students they are unable to qualify CSS. First, like written part of the CSS. So before like diving deep into what are the main reasons, let me introduce myself. I am Adnan Magsi and I am lecturer of English at University of Sindhi campus, Dadu, and I have been teaching academic writing since last 2 years, and I have been working with a few students, those who wants to appear in CSS after their degrees. So सभ खां पहिरियां त सभिनी खे ख़बर आहे त असां वटि डिफरेंट अकेडमीज़ आहिनि CSS जी तयारी जेके कराईंदा आहिनि। त more than 19,000 students, what I personally believe कि तकरीबन जेके भी students CSS जी तैयारी कनि पिया, they are affiliated with or they have joined any CSS academy, like we have different in different cities of Pakistan. But the output, the results are not satisfactory. So what they are doing, I'm not here to criticize anyone, any academy or education system, but it is कि some academies, these academies have become a sort of very lucrative business. So तव्हां अकेडमीज़ बि जॉइन कयो था, उन खां पोइ बि तव्हांजी रिज़ल्ट्स उहा कोन पई अचे। असांजो एजुकेशन सिस्टम जेको आहे उहो बि नो डाउट देयर आर प्रॉब्लम्स, बट टुडे आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज बोथ ऑफ दीज. So what I am going to discuss today is what is your responsibility as a candidate for one of the most competitive exams in Pakistan. So before I discuss what are the main reasons, let me ask you a few questions which I have personally noted down. These questions will help me to sort out whether you are working on your skills you by using traditional methods, or you are using some modern ways to learn. So one of the question is what is self-education? And by the way, if you have got answers to these questions, it's very good, and if you know about these, it's excellent. But what I want you people to do is कि तव्हां सिर्फ़ इन्हनि क्वेश्चन जा yes or no में जवाब ॾियो। अगर तव्हांखे ख़बर आहे, तव्हांखे अचे थो त yes, and we'll discuss why we are discussing this one. कि what is you have to answer them in yes or no and nothing else. Clear? So the very first question is what is self-education, and second is, do you know Tony Buzan? Have you ever heard about the book Limitless by Jim Kwik? And then we have Pomodoro Technique. Pomodoro Technique ji khabar aahe. And then we have Feynman Technique. It is also another technique. And then we have KWL method. And then we have on 7th, it is ladder of learning. Do you know what is ladder of learning? Yes or no? And then we have another book, Made to Stick. And then we have Bloom's Taxonomy, one of the famous concept in education. Then we have multiple intelligences or different learning styles, and we have 6 thinking heads by Edward de Bono. And then we have what is referencing in academics, and what is in-text citation, and then we have quote, how to quote.
I hope a few of the questions you have given, you have answered with yes, and I hope कि तव्हांखे ख़बर हुजणु खपे एतिरी त तव्हां तक़रीबन सवालनि जा जवाब yes में ॾिना हुजनि. It's a good thing. I'm just repeating the questions. Number one says, what is self-education? And other says, who is Tony Buzan? And third one is the book Limitless by Jim Kwik. And then we have Pomodoro Technique. And then we have Feynman Technique, KWL method, ladder of learning. And then we have Made to Stick, again a book. And then we have Benjamin Bloom's Taxonomy. And then we have multiple intelligences and learning styles. And then we have 6 thinking heads by Edward de Bono. And then we have what is referencing, in-text citation and out-text citation. And the last one is how to quote and research. So these are the questions. If you know their answers, you have to say yes. If you do not know their answers, just say no. We'll discuss later in this video okay, why I asked these questions. Like अगर तव्हां गुज़िरियल 10 सालनि जी हिस्ट्री ॾिसंदो CSS में त जेके टॉपर्स रहिया आहिनि उहे या त ॿाहिरि मुल्कनि मां पढ़ियल आहिनि या त पाकिस्तान जी कंहिं सुठी यूनिवर्सिटी मां पढ़ियल आहिनि ऐं हुननि जो बैकग्राउंड तक़रीबन तव्हांखे A लेवल या O लेवल्स मां मिलंदो ऐं तव्हांखे घटि बिल्कुलु घटि मिलंदा जेके आम लाइक पब्लिक सेक्टर स्कूल्स मां जेके सरकारी स्कूल आहिनि असांजा उन्हनि मां पढ़ियल हुजनि रेयर केस में तव्हांखे मिलंदा ऐं उन खां पोइ लाइक लाहौर लम्स मां हूंदा या कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी मां हूंदा ऐं मीन्स कंहिं बि सुठी यूनिवर्सिटी मां क्वालिफाइड हूंदा इन अनफॉर्चुनेटली असांजी सिंध जी का यूनिवर्सिटी उन लेवल ते कोन पई अचे दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. So when it comes to studying abroad, there are certain things that makes them unique, that makes them different and better than like common students. So this is not your fault के तव्हां हिकिड़ी नथा पढ़ी सघो because of financial problems or lack of resources तव्हां कोन था पढ़ी सघो ॿाहिरि, but as an individual still you can do so many things which we are going to discuss in this video later. So now you have to think about there are candidates who qualified like 376 and there are candidates who could not. So what makes them different? What are the differences? Is it because of their education? Is it because of their like learning environment, like because of their environment in which they live or in which they have like lived in like in their earlier lives, or they are better equipped with different skills? So let us see the other side of the coin. On the one hand, we have those who qualify. They have better skill, they have better environment, better education. On the other hand, we are like common people, those who could not qualify. हाणे हुन में उहे बि हूंदा जेके सुठनि इदारनि मां बि पढ़ियल हूंदा बट स्टिल दे आर अनेबल टू क्वालिफाई CSS. सो अगरि तव्हां CSS लाइक ॾेई चुका आहियो या तव्हां ॾियण जो इरादो बि रखो था त ऐं तव्हांखे घणनि शयुनि जी ख़बर बि आहे जेके टेक्निक्स वग़ैरह मूं दीज वर द फ्यू बेसिक बाय द वे देयर आर सो मेनी अदर टेक्निक्स टू स्टडी बेटर. अगरि तव्हांखे ख़बर आहे त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे. अगरि तव्हांखे ख़बर न बि आहे then you are at the right place. So I'm going to share with you a few basically 3 skills which I personally believe are going to help you to like, I do not say कि अगर तव्हां वटि स्किल हूंदा त तव्हां लाज़मन क्वालिफाई करे वेंदा, but these really count. These are the skills which as a teacher I have observed in my students कि majority of the students they lack these skills. And the very first skill is that is learning skill. हाणे मसलो छा आहे
त when it comes to learning skills, असां प्राइमरी खां वठी पढ़ंदा पिया अचूं, यूनिवर्सिटी मां ग्रेजुएट थियासीं, हाणे असां वटि हिकिड़ो माइंड सेट डेवलप थी वेंदो आहे त असांखे सिखणु अचे थो. But in reality, it is not like that. Learning is a skill that needs to be like practiced the way like we have been practicing so many things. So it is a consistent if you need consistent effort to develop your skill, learning skill. like अॼु खां जेकर तव्हां 15-20 साल अॻु में कंहिंखां पुछंदो त उनखे का ख़बर बि कोन हूंदी लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग कीअं थींदी आहे. ठीकु आहे, या अगरि ख़बर बि हूंदी त चंद माण्हुनि खे ख़बर हूंदी, पर हींअर अगरि मां तव्हांखे पुछां त तव्हांखे ऑनलाइन लर्निंग जी ख़बर आहे त तव्हांखे ख़बर हूंदी. एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेज वी आर लाइक इंटरेक्टिंग थ्रू लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. सो लर्निंग बि ईअं न आहे त तव्हां बसि सिखी वियो, तव्हांखे सिखणु अचे थो, तव्हांखे पढ़णु अचे थो, तव्हांखे हैंड राइटिंग अचे थी, एंड इट इज़ नॉट लाइक दैट. सो वट कम्स इन लर्निंग. लर्निंग इज़ बेसिकली स्किल जेको असांजो प्राइमरी खां ई वठी मीन्स जॾहिं असां प्राइमरी में हूंदा आहियूं असांखे हर शइ सेखारी वेंदी आहे. असांखे अलिफ बे खां वठी वर्ड्स कीअं प्रोनाउंस कजनि, कीअं उन्हनि खे चइजे, उनजी मीनिंग, उनखे कीअं सेंटेंस में यूज़ कजे, डिफरेंट लेसन्स. असांजो लर्निंग जो जेको असल जेको मीन्स हूंदो आहे प्लेटफॉर्म जेको असांजी लाइफ में जेको आहे उहो पर्टिकुलरली जेकर मां पंहिंजो ॾिसां त उहो प्राइमरी ताईं महदूद थी वियो. माना प्राइमरी ताईं असां सिखियोसीं पिए. बाद में त असांखे सिर्फ़ु छो जो असांखे पढ़णु बि अचे पियो, लिखणु बि थोरो घणो अचे पियो, त असांखे उहा ई शइ बसि मीन्स या अज़्यूम कई वई त हिननि खे अचे थो बसि, विच इज़ वेरी रॉन्ग. ऐं असांजे सिखण जो अमल जेको आहे उहो सिर्फ़ु मीन्स इंफॉर्मेशन ते महदूद थी वियो. बट वी कुड नॉट डेवलप अवर स्किल्स, learning skills. So the things I told you, these are the few things like Pomodoro Technique. It is one of the technique to divide your task into different chunks and work for like तव्हांखे को टॉपिक आहे, तव्हां हुन में 25 मिनट पढ़ो, वरी 5 मिनट रेस्ट कयो, वरी 25 मिनट पढ़ो, वरी 5 मिनट रेस्ट कयो. And this is one of the ways to divide your topic into different parts and work on that. And then we have KWL method. This is one of the most effective methods which I have been using when I study. K means know, W means want to know, and L is learned. So basically whatever we study, we divide that topic, that concept into 3 parts, K, W and L. So K means what you already know. In this section we write whatever we know about that topic, and then we have what we want to learn. So in this section we write what are our learning objectives, and then we have, when we are done with our like complete process, in the end we assess ourselves whether we have learned that thing what we were looking for or not. So this is one of the effective ways. What you already know, what you want to learn, and what you want to like what you learned in the end. So this is a sort of assessment too. कि तव्हांखे ख़बर बि आहे त ही शयूं तव्हांखे ख़बर आहिनि, ही तव्हांखे शयूं ख़बर न आहिनि, हाणे तव्हांखे सिर्फ़ु इन्हनि ते ई कमु करणो. This is one of the most effective ways which I have been using, and I suggest you people to work on it. So these are the certain techniques which I want you people to learn. The purpose of telling these things is there are so many things which in our education system they are not part of our education system. असांखे कोन सेखारियो वेंदियूं आहिनि इहे शयूं. त तव्हांखे एज एन इंडिविजुअल इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तव्हां इन्हनि शयुनि खे सिखो. एंड तव्हां आई वुड सजेस्ट कि अगरि तव्हां CSS जी तयारी स्टार्ट कयो पिया ऐं तव्हां इनिशियल स्टेज में आयो एंड यू हैव इनफ टाइम, त पहिरियां जेके 3 महीना आहिनि तव्हां कंहिं सब्जेक्ट खे जेकर पढ़ो था त इट्स गुड. बट शुरू वारा जेके बि ॾींहं माना महीना आहिनि 2 या 3, तव्हां सिर्फ़ु इन शइ खे पढ़ो त पढ़जे कीअं, सिखजे कीअं, लिखजे कीअं, मीन्स डेवलप योर लर्निंग स्किल्स, स्टडी स्किल्स. मां टोनी बुज़ान जो नालो वरितो. टोनी बुज़ान इज़ वन ऑफ द राइटर्स who gave the concept of mind map. माइंड मैप जी तव्हांखे ख़बर हूंदी अगरि तव्हां CSS जी तयारी कयो पिया त. सो माइंड मैप जो जेको फाउंडर हुयो टोनी बुज़ान,
उनखे पढ़ो. How to study, he has written 4-5 books on how to study. कि तव्हां कीअं सुठे नमूने सां पढ़ी सघो था उन्हनि खे पढ़ो. मेड टू स्टिक इज़ वन ऑफ द बुक जंहिंमें तव्हांखे ख़बर पवंदी त भई वॉट इज़ साइंस बिहाइंड लर्निंग. हाणे 3 महीननि में अगरि तव्हां 3-4 मेजर जेके बुक्स आहिनि उहे पढ़ो लर्निंग ते, कुझु आर्टिकल्स पढ़ो, कुझु यूट्यूब था वीडियोज़ ॾिसो, कुझु तव्हां ब्लॉग्स पढ़ो. पहिरियां 3 महीना तव्हां सिर्फ़ु इन्हनि शयुनि ते कमु कयो कि भई सिखबो कीअं. हाणे तव्हांखे सिखणु अची वियो. This would be this would be the thing that will make you unique, different from others. हाणे तक़रीबन जेके स्टूडेंट फेल थियनि था उन्हनि खे इहा ख़बर ई न आहे. अगरि ख़बर आहे बि त they are relying on very old methods of learning, very traditional approaches to learn anything. So तव्हांखे थोरो एडवांस थियणो पवंदो. तव्हांखे न्यू वेज़ जेके आहिनि सिखण जा ऐं सवला तरीक़ा, आसान तरीक़ा जेके आहिनि सिखण जा उहे सिखणा पवंदा. उहे सिखी जॾहिं पोइ तव्हां CSS में इन थींदव. उन्हनि सब्जेक्ट्स जेके तव्हांजा कंपल्सरी आहिनि, ऑप्शनल्स आहिनि, उन्हनि ते तव्हां ईंदो. यू वुड बी एबल टू वर्क मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. So this was the first skill I request you people to work on if you are serious enough and if you really want to qualify your CSS and if you really want to materialize your dream of becoming a CSV. And other is that is basic research skill. Now this is one of the things के असां वटि जॾहिं रिसर्च जो टर्म यूज़ थींदो आहे त माण्हुनि खे हिकिड़ो फील थींदो आहे दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स सबमिटिंग अ माउंट एवरेस्ट. बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. देयर आर सर्टेन वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल थिंग्स which every student at graduate level like 16 year education या BA भी कयो था कॉलेज साइड खां त तव्हांखे इहे शयूं अचणु खपनि. बेसिक रिसर्च मां मुंहिंजो मुराद इहो आहे त तव्हांखे सिंपल स्किल्स लाइक पैराफ्रेजिंग तव्हांखे अचणु खपे, तव्हांखे समराइज़िंग अचणु खपे, तव्हांखे कोट कीअं कजे, कंहिं आथर खे कोट कीअं कजे, उन में पंहिंजी एनालिसिस कीअं ॾिजे उहो तव्हांखे ख़बर पवंदी. हाणे CSS में अगरि तव्हां एग्ज़ाम ॾियो था त तव्हां खां नो डाउट तव्हांखे नॉलेज बि शो करणी आहे, इंफॉर्मेशन डिफरेंट शयूं शो करणी आहिनि. बट तव्हां अगरि सिर्फ़ु कोट कंदो ऐं कोट खे पंहिंजे वर्ड्स में पंहिंजे हिसाब सां, पंहिंजे टॉपिक जे हिसाब सां एनालाइज़ न कंदो त इट वुड बी यूज़लेस, व्हाट आई पर्सनली थिंक. सो तव्हांखे कोट करणु अचे. कोट जो हिकिड़ो तरीक़ो हूंदो आहे विच नॉर्मली वी यूज़ इन रिसर्च एट बेसिक लेवल. त तव्हांखे सभ खां पहिरियों कोट जे बारे में कुझु न कुझु ॿुधाइणो हूंदो आहे. उनखां पोइ तव्हां कोट कंदा आहियो, उनखां पोइ तव्हां पंहिंजी एनालिसिस ॾींदा आहियो ऐं तव्हां उन शइ खे रिलेट कंदा आहियो पंहिंजे टॉपिक सां. सो उनखां अलावा रिसर्च में हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि जेका मूं ॾिठी आहे पर्सनली त जेके एस्पायरेंट जन जेके मूंसां टच में आहिनि त उन्हनि में न हूंदी आहे, उहा इहा आहे त दे डू नॉट नो हाउ टू गिव रेफरेंस. In referencing we have in-text citation, we have out-text citation. So in-text citation is very important. For example, if you say judge a man by the questions he asked rather than the answers he gave. So वोल्टेयर चयो आहे इहो. हाणे वोल्टेयर चयो आहे, हिकिड़ो वोल्टेयर सभु को लिखी सघे थो, सभिनी खे कॉमनली ख़बर हूंदी अगरि जीअं पढ़ियो हूंदो त वोल्टेयर चयो आहे इहो. बट अगरि को रिसर्च वारो स्टूडेंट हुजे जेके जंहिंजा बेसिक रिसर्च स्किल हूंदा त उहो कोशिशि इहा कंदो त कहिड़े किताब मां वरितल आहे इहो ऐं कहिड़े साल में उहो किताब लिखियल आहे. सो वेन वी गिव इन टेक्स्ट साइटेशन वी राइट द राइटर्स नेम एंड इन विच ईयर दैट बुक इज रिटन ऐं जेकर थी सघे थो त पेज बि ॾींदा आहियूं, पेज नंबर बि ॾींदा आहियूं. सो दीज आर द वेरी बेसिक स्किल्स यू नीड एज अ CSS एस्पायरेंट. हाणे समराइज़िंग आहे, पैराफ्रेजिंग आहे. जीअं तव्हां कॉम्प्रिहेंशन लिखो था, कॉम्प्रिहेंशन वारो क्वेश्चन सॉल्व कयो था त तव्हांखे मोस्ट प्रोबेबली यू नीड दिस पैराफ्रेजिंग. एंड सेम इज़ द केस विथ समराइज़िंग. समराइज़ बि कंदा आहियूं पाण हुते, पैराफ्रेज बि कंदा आहियूं. उनखां पोइ प्रेसी में बि तव्हांखे इहा शइ कमु ईंदी त तव्हांखे ख़बर हुजणु खपे त तव्हांखे पैराफ्रेज कीअं करिणो आहे, तव्हांखे समराइज़ कीअं करिणो आहे शयुनि खे. सो दीज आर द वेरी एंड देयर आर अदर्स टू, बट एट वेरी बेसिक लेवल दीज आर द रिसर्च स्किल every CSS aspirant must know.
And the last but not least, this is one of the most important skill, third one, that is creative and critical thinking. If you remember, I asked you about Six Thinking Hats by Edward de Bono. Now, Edward de Bono is one of the writers जेको creativity and critical thinking, but particularly creative thinking में दुनिया में मशहूर आहे. हाँ जरा क्रिटिकल थिंकिंग ऐं क्रिएटिव थिंकिंग जी ॻाल्हि ईंदी आहे त असांजा जेके कन हूंदा आहिनि न उहो सोरीस वेंदा आहिनि फरक थी वेंदा आहिनि असांखे लॻंदो आहे का वॾी भला आहे बट इट इज़ नॉट लाइक दैट देयर आर सर्टन टूल्स देयर आर सर्टन टेक्निक्स टू डेवलप योर क्रिएटिविटी डेवलप योर क्रिटिकल थिंकिंग हाणे क्रिटिकल थिंकिंग ॾिसो असां वटि जीअं CSS में तक़रीबन सवाल ईंदो आहे डेमोक्रेसी ते तक़रीबन सवाल ईंदो आहे हाणे डेमोक्रेसी में जेकॾहिं तव्हांखे जनरल शइ इहे हूंदी द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज़ इट सुटेबल फॉर पाकिस्तान और नॉट डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप हाणे तव्हां या असां जेके नॉर्मली जेके हूंदा आहियूं असां इहो ई ॾिसंदा आहियूं त के डेमोक्रेसी आहे छा डेमोक्रेसी जा पिलर्स छा आहिनि डेमोक्रेसी कीअं सुटेबल थी सघे थी करप्शन कीअं उनखे जेको आहे सो मसइलो आहे करप्शन हुन लाइ but we haven't seen what I person because I have a degree in philosophy too, so I have studied political philosophy. So there are certain downsides, or there are certain negatives of democracy too. And वो democracy का केड़ा है अगर तव्हां उनखे basically the idea is कि तव्हांखे different शयुनि खे different angles खां ॾिसणु अचे त तव्हां जेको बि सवाल अचे उन फील्ड फॉर एग्जाम्पल तव्हां डेमोक्रेसी ते हिकिड़ो टॉपिक तयारु कयो बट तव्हां हिकिड़े ई वे सां हिकिड़े ई तरीक़े सां हुनजा पॉज़िटिव नेगेटिव्स ॿई ॿुधाया बट तव्हां जेको नैरेटिव खयो उहो पाकिस्तानी खयो या जेको उहो नैरेटिव खयो जेको प्रो डेमोक्रेसी आहे जेको डेमोक्रेसी जी फेवर में आहे बट तव्हां उनजे अपोज़िट में जेके व्यूज़ आहिनि तव्हां उहे नथा खणो या प्लेटो जीअं एरिस्टोटल थी वियो जॉर्ज मिल्स थी वियो जेको 19th सेंचुरी में यूटिलिटेरियन आहे उहो थी वियो या वन ऑफ द बुक्स इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी और द एंड ऑफ द डेमोक्रेसी इज another book. Now these are the books that are very critical to democracy, so you need to read them, you need to different point of view. ऐं जेकर ई साॻी टॉपिक खे डेमोक्रेसी खे अगरि वठूं त we have different perspectives to see this. We can use different perspective. हाणे पर्सपेक्टिव कीअं थी सघंदा पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव थी सघे थो रिलीजियस थी सघे थो इकोनॉमिक थी सघे थो उन खां पोइ साइकोलॉजिकल थी सघे थो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव थी सघे थो नेशनल थी सघे थो इंटरनेशनल थी सघे थो so these are basically certain sort of perspective you can have in your mind while discussing these things. And Edward de Bono's Six Thinking Hats also teaches you how to be creative like that. So these are a few points which I think are very important. The first one is your learning skills. You must know the new learning techniques, strategies, the ways, methods. तव्हांखे ख़बर हुजणु खपनि तव्हांखे सिखणु अचणु खपे कि सिखबो कीअं पोइ तव्हां अॻिते कुझु करे सघो था मीन्स कुझु सुठो परफॉर्म करे सघो था. एंड द सेकेंड इज बेसिक रिसर्च स्किल लाज़मी सिखो लाज़मी तव्हांखे अचणु खपनि. These were the very few which I told you. And then we have creative and critical thinking. See, creative and critical thinking, like I'll be making videos on like each skill. उन्हनि ते मां videos ठाहींदुमि. I'm thinking to do it. But अगरि टाइम मिलियो त कोशिशि कंदुमि त उन्हनि ते ठाहे वीडियो अपलोड कंदासीं त कीअं इहे स्किल्स डेवलप थियनि बिकॉज आई एम टीचिंग पेडागॉजी टू इन दिस सेमेस्टर आई हैव टाट बिकॉज सेमेस्टर ख़तमु थी वियो हिन गुज़िरियल सेमेस्टर में मूं पेडागॉजी पढ़ायो आहे त उन में मूं इहे तक़रीबन बुक्स जेके तव्हांखे ॿुधाया मेट्रिस्टिक या लिमिटलेस या ब्लूम्स टैक्सोनॉमी या डिफरेंट अदर बुक्स जेके मूं पढ़िया आहिनि त उन्हनि ते डिस्कस कंदासीं पाण त लर्निंग कीअं कजे नवां वेज़ जेके उहे सिखंदासीं. एंड आई होप कि तव्हांखे हिन वीडियो मां कुझु न कुझु सिखण लाइ मिलियो हूंदो ऐं कोशिशि इहा हूंदी त तव्हांखे वधि खां वधि सुठे खां सुठी नॉलेज ऐं तव्हांखे स्किल्स डेवलप करण जा आसान खां आसान तरीक़ा तव्हां सां शेयर कजनि. ऐं अगरि तव्हांखे थोरो घणो हिन वीडियो मां कुझु बि वैल्यू मिलियो आहे त कोशिशि इहा कयो त हिनखे शेयर कयो ॿियनि दोस्तनि ताईं बि ताकी उहे बि कुझु सिखी सघनि. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. अल्लाह हाफ़िज़.